वेलकम ऑल वेलकम ऑल। वेट बेटा। वेट बेटा। अटैचिंग कमेंट्स। फ्यू मोर सेकेंड्स। वेलकम वेलकम बेटा, वेलकम ऑल। I hope audio and video is clear to all of you. Video off for few more seconds. Wait बेटा, wait. Class will start in few more seconds. Okay बेटा, all set. I hope now I am visible to all of you बेटा. Please confirm all बेटा, audio and video is clear to all of you. Very good, very good. Okay. So now today I am very happy to start another new subject in Pure Numericals batch, mechanical operation. And but everyone try to join numerical batch live. Okay, maybe you feel some demotivation if you miss or you are unable to solve any problem. But don't worry, beta. With increasing number of classes, with practice, definitely you will get your confidence. Okay. Hello Vidankish, Sheikh Mudashir, Vibhas, Viswas, Javel, Sanket, Sampat, Sujata, Gautam. स्वागत है बेटा आप सभी का. You're all welcome. Those who are new here बेटा, you can ask your doubts in Hindi as well as in English बेटा. Okay. So this is another subject, mechanical option, pure numerical batch for GATE. As you all know, this is Gaurav Srivastav, sir, educator at GATE Chemic Learning App, GATE Chemic Institute with 11 plus years of teaching experience. And reference, you can take a makeup and my written by book, me, written by me, and Gate Chemic OTQ's book, and all in one for CH. Coming soon, beta. Fourth number is coming soon. And these lectures are beneficial for GATE, IFS, your semester examination, interview, as well as knowledge purpose. Feel every numerical with crystal clear concepts, beta. I will cover full syllabus for mechanical operation chemical engineering is in this lecture series. You can follow me on YouTube. The channel name is Gaurav Srivastav or Gate Chemic. Telegram channel and discussion groups are there. If you are unable to find those groups or channels,
Just message me, WhatsApp me. I will send you link, beta. Just WhatsApp me on 9451707049. I will provide you link there. You can follow me on Facebook too, beta, and don't forget to give your review there with a beautiful comment, beta. Okay, you can follow me on Instagram and as well on Twitter. This time I am a little bit inactive on Instagram and Twitter. So now, beta, सभी का स्वागत है, ऑल वेलकम इन दिस लेक्चर नंबर वन. एंड सभी लोग एक बार पूरे जोश के साथ बोलोगे, एवरीवन विद फुल जोश, सर आई एम रेडी फॉर प्रॉब्लम नंबर वन. आर यू ऑल रेडी, बेटा? जस्ट टेल मी यस इन कमेंट सेक्शन. Just write yes in comment section, everyone, beta. Then I will show you today's problem number one. Come on, everyone, everyone. Audio video is clear? Okay. So now, this is beautiful problem number one coming soon. Okay. So now, this is your problem number one and two. And I will start first timer after 30 second, beta. So try to solve this problem. This is very easy problem and important for your gate examination. Those who missed classes of CRE, process calculation, fluid mechanics, heat transfer operation, try to complete lectures available in CRE, PCFM, STU as soon as possible, beta. Okay. Again, we will practice more numericals in CRE, PCFM, and STU after few more days. This time MO is going on. And after MO, scheduled start of IPC with mass transfer operation. Okay, so be prepared for next subject to, beta. And after completing all subjects, again I will make a batch of mixed subject. And also we will practice in CRE, PC, FMS2 and all till your gate examination. Okay, beta. So now I am going to start timer number one, beta. The lab test has been performed on a calcium carbonate slurry. The filtration area equals, oh my god, filtration area कहाँ गया? यहाँ तो लिखा था, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ भाई. फिल्ट्रेशन एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर, ये गायब कैसे हो गया? इनविजिबल, हाउ इज दैट? ओहो, लगता है ये नंबर लॉक था और हम बैठ के नंबर दबाए जा रहे थे. नंबर लॉक हो गया था उस समय लगता. कोई इफ यू फील एनी डेटा इज मिसिंग, बेटा आस्क मी इमीडिएटली. ओहो, सारे ही न्यूमेरिकल डेटा इसमें मिसिंग होंगे बिकॉज टाइप तो कर दिया बट नंबर लॉक लग रहा है, क्लिक हो गया था. ओके, this data is 50. I will refresh timer, don't worry. Okay, चलो आप सॉल्व करो, हम मिलाते हैं तब तक कि कोई और डेटा तो मिस नहीं हुआ. 1 2 3. ओके, 3 here. ओके, ओके, ओके बेटा, नाउ एवरीथिंग इज फाइन. ओके, ओके बेटा, come on everyone. If you want any help, then you can take help from my side in second timer, before start of second timer. This is a problem from constant pressure filtration, beta, because clearly mentioned in third line, a constant pressure drop of 50 kilopascal is maintained during entire experiment.
आज के इस लेक्चर में हम टोटल 5 प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, जिसमें 2 प्रॉब्लम है जिसके टोटल पार्ट मिला के 5 होते हैं बेटा। सो आफ्टर दैट आप अपने रिवीजन को चालू रखेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम मोर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। बट चूंकि आज का प्रॉब्लम थोड़ा सा लंबा है, लेंदी है, इसलिए आई थिंक 5 इज टू मच फॉर 1 hour and 15 minute lecture. Next lecture should be nearby 1:30, means 1 hour 30 minute to 2 hour. Okay beta, so task number 1 completed. Come on. कौन सा अपडेट शेख बेटा? टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ लेक्चर, आप वहां पे क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हो लाइव क्लास के दौरान, इसके अलावा कुछ भी अपडेट नहीं है बेटा। आप लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं करते थे, इसलिए आपको लाइव क्लासेस में लग रहा है। अगर बेटा ये फुल स्क्रीन आपकी नहीं आ रही हो तो लेफ्ट में देखो एक और बटन है, उस पर क्लिक कर दो। लैग कर रहा बेटा, लैग इसलिए कर रहा है बिकॉज आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो होगा। क्वालिटी को ऑटो पे सेट कर दो बेटा, सेट क्वालिटी टू ऑटो। शेख मुदाशिर, सेट क्वालिटी टू ऑटो। अंकित टोल्ड मी 1.2.5, व्हाट इज दिस बेटा? 1.25 और 1.2.5 और जस्ट 2.5? If just 2.5, then you are absolutely correct. I think you are telling me that you told me that 2.5 is my answer. Yeah, beta. Congratulations. I'm very happy. You are absolutely correct. या वेरी गुड बेटा। फर्स्ट का आंसर 2.5 ही है। क्या बात है। जो बच्चा नहीं लगा पाया, नो नीड टू वरी। ओके, सो आई एम गिविंग यू दैट फिल्ट्रेशन इक्वेशन। ओके, सो टेक हिंट फ्रॉम माय साइड, देन आई विल स्टार्ट next timer. Okay, you know now, for any type of filtration your differential equation was dt by dv equals to k v plus b. I'm writing b here in case of this is constant, but I'm still writing b. Why? Because a c we are using for concentration term in filtration chapter. Okay, and by this equation you can integrate, and after integration it can be done as k, and we will give you v square by 2 and plus b into v, and you can rearrange this as t by v equals to k by 2 into v plus b. Now you can see beta, if you are going to plot t by v versus v, then here your slope is k by 2. Your slope is k by 2. Now the question is, in our mother equation, that was dt by dv equals to kv plus b, what is the value of k and what is the value of b? Okay, so please beta, if you don't know, then please remember the value of k is mu alpha c. What is c beta? C is mass of solid per unit volume of filtrate. Okay, so mu alpha c upon a square delta p, this is your k. And beta, please remember, okay, because by using just the value of k and b you can solve lots of problems relating this filtration chapter. Okay, and the constant b is mu rm upon a into delta p. Okay, so these are the values of k and b. Okay, now hint is over, अब आप सॉल्व करेंगे फटाफट। Data is there, so you have to find this slope. After finding this slope, just put k from here, and the unknown term is alpha. You want to calculate with the help of this slope beta, you have to calculate alpha. ठीक है, तो फटाक से इसको आप सॉल्व करेंगे।
हम एक बार फिर से आपके लिए ब्यूटीफुल वाला टाइमर ले आ देते हैं हिंट के साथ साथ। हिंट आई होप अगर आप इक्वेशन नोट कर लो, आई एम गिविंग यू 10 seconds टू नोट डाउन, देन आई विल शो यू प्रॉब्लम अगेन। Please note down beta. For this problem you need to just write this k, but don't forget this is k by 2 is slope, k is not your slope, k by 2 is your slope. Okay beta, so now I am showing you problem, and for calculation purpose I am giving you another 2 minutes. Come on everyone. 100 second approx left. You can see by taking any two values, the value of slope is still same to same. That means t versus t by v versus we got a linear or a straight line, linear profile. So the slope can be written as y2 minus y1 upon x2 minus x1. That means 2 point you have to take on y axis and 2 points you need on x axis. So you can take any two. Any two will give you beta same slope value. And Ankish beta, please solve second one beta. The filter medium resistance is. Come on. Tell me beta, what is the value of filter medium resistance? Last 30 seconds beta, come on. Try to increase your calculation speed. And viscosity of the filtrage is just 1 cp. So don't forget to convert this cp into SI unit. Because everything is in this problem is in SI unit. Kilogram, meter cube, second. And also, but don't forget to convert 50 kilopascal to Pascal, because 50 kilopascal is not in that unit. Okay, so you have to convert 50 kilopascal to 50,000 Pascal. टाइम तो खत्म हो गया भैया, और टाइम चाहिए क्या? वेरी गुड बेटा विभास, 2.5 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. दूसरा वाला भी तो बता दो भाई, सेकंड वाले का भी तो आंसर बताओ. सेकंड वाला नहीं लगा पा रहे क्या? यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व सेकंड वन? एनीवन? और टाइम चाहिए क्या? चल भाई रिफ्रेश हो जा भाई टाइमर. लो बेटा रिफ्रेश कर दिया आपके लिए टाइमर. चलो another 2 minute and last 4 minute. फर्स्ट टाइमर फॉलोड बाय सेकंड टाइमर. तब तक सेकंड वाला भी लगा के दिखाओ. And in examination to solve this problem you can take maximum 2.5 to 3 minute बेटा. 3 मिनट से ज़्यादा नहीं ले सकते हो इस प्रॉब्लम के लिए. 2 मार्क प्रॉब्लम है ये. But 2 or 3 minutes, 3 minutes is more than sufficient to solve this problem. If you know what is the value of intercept and slope, then 100% you can solve this. But in slope, don't forget to remember slope is k by 2, not k. K is not slope. Slope is k by 2. अंकिश का बहुत ज़्यादा आ रहा फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस. कितना आ रहा बेटा? कैसे लगा रहे हो फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस को? वेरी गुड जेवल, 2.5 इज करेक्ट. सोचो सोचो बेटा कैसे लगेगा. ट्राई टू थिंक.
सेकंड वाला कैसे लगेगा, द फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस? Because in this same problem they can ask you filter medium resistance, rm. Okay, final 2 minute beta, after that I will explain. Last 1 minute beta. Time up beta. Okay beta, no need to worry, pay attention here. No beta ji, I will C is 2500. What is C beta? You want to tell me solid concentration? The C is just 25 na, already given. 25 kilogram per meter cube of filtrate, that is solid concentration in the slurry. Okay, now pay attention here beta, I am going to explain. First beta, how to obtain this alpha. So just K by 2. So K, in place of K I can write mu alpha C upon A square delta P, and already 2 is there. So this slope, and what is slope beta? What is the value of slope? You can easily obtain by taking any 2 point, because T by V versus V. So I am taking these two. So 10,000 on y axis, this is your graph T by V versus V. Okay. So 10,000 minus 5,000 upon 40 by 20, minus 20. So 10,000 minus 5,000 upon 40 minus 20. So it will give you 5,000 upon 20. And finally, I think 250. 250 is the value of my slope, and the unit of slope is second meter to the power minus 6. Second meter to the power minus 6. Okay, so this is my slope. So I'm putting this becomes equals to 250. Okay, beta. Now, alpha can be obtained as alpha equals to 250 into 2 will give you 500, and 500 into a square into delta p upon mu into c. देख लेना बेटा, कुछ मिस हो तो बता देना. So 500
area was 0.05 square, and pressure was 50,000, 50 kilopascal, that means 50,000, and 1 centipoise becomes equals to 1 cp becomes equals to 0.001 kilogram per meter per second. Okay, so it's 0.001, and concentration of solid in slurry is given as 25. After solving, you will get the value of alpha, और ये बहुत बड़ी वैल्यू आने वाली है अल्फा की. You will get alpha 2.5 into 10 to the power 6. Okay, and all thing in SI unit, that is in meter per kg. So your answer will be 2.5, because already into 10 to the power 6 is there. If 10 to the power 6 is not there, then you have to write 250000. This should be your answer, beta. Okay, yes, Vivas, absolutely correct. Resistance is 0. You can check, beta. Intercept is 0 in this case. Okay, by taking any T by V and V data, you can check, beta. Okay, so now see here. For a second one, this one, problem number 1. Now, for second one, you can take any data, beta. My desired equation was T by V equals to K by 2 V plus B. Okay. I just want to know what is the value of this B. But B is mu Rm upon A delta P. This is mu Rm upon A delta P. So now, by first data, T by V versus V. Wait, first data was T by V 5000. Okay. And slope was 250 by 2 multiplied by V was 20 plus B. देखो भैया, जीरो तो आपने कह दिया, क्या यहाँ से जीरो आ रहा है? अगर आ रहा है तो सही हो आप, अदरवाइज गलत हो आप. बोलो भैया, इज इट जीरो? K by 2 is 250 ना. Wait beta, wait. Slope is 250 na. So hold, K by 2 is 250. Okay. Now you can check beta. 250 into 20 will give you again 5000. That means B is 0. You can check by using any data. यहाँ जब ये डबल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी 20 का 40 हो जाता है. So 100% again B will be 0. So by any data you will get same value of B. Yeah beta. So now what is B? B is 0. And what is B? B is mu Rm upon A delta P equals to 0. Now see beta. To make B equals to 0, one thing you must clear beta, this mu can't be 0. Area already given, this is not 0. Delta P is not 0. Only Rm can be 0. So that this equation will give you 0. That means filter medium resistance is 0. Is it crystal clear to all of you beta? वो तो बेटा आपका इंटरमीडिएट टर्म हो गया ना अंकित, दैट वाज इंटरमीडिएट टर्म. ओके, गो थ्रू योर डेरिवेशन वंस अगेन. एक बार फिर से डेरिवेशन को चेक करेंगे अपने. ओके ओके बेटा, सो इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फर्स्ट एंड सेकंड वन, पहला और दूसरा पार्ट सभी लोग को क्लियर है? और यहाँ से देखो ना, साफ साफ तो दिख रहा है ये आपका ओरिजिन से होके ही जा रहा है. इफ यू वांट टू प्लॉट दिस ऑन ग्राफ देन यू कैन सी दिस विल पास थ्रू ओरिजिन. ओके ओके बेटा, एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? शैल वी मूव फॉरवर्ड टू प्रॉब्लम नंबर 3, 4 एंड 5? कम ऑन बेटा एवरीवन, मजा आया सभी को इसमें? एंड यू नीड टू रिमेंबर this equation. By this equation you can derive this one in your examination. This equation and this equation, these three you must remember beta, don't forget. Okay,
Okay, beta. So now I am showing you problem number 3, 4, and 5. Beautiful problem, beta. Beautiful problem formulated by me. Come on, बेटा. आई होप कि इसको आप क्रैक करोगे. इसमें तीन तीन क्वेश्चन हमने बनाए हैं बिकॉज इन योर एग्जामिनेशन दे कैन आस्क यू एनी वन बेटा. इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है. तो कह सकते हो सर्वगुण संपन्न क्वेश्चन है, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला. इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आएगा, इफ दे ask you any problem relating this topic then 100% you will solve that problem, क्योंकि सब कुछ है इसमें बेटा. To filter a magnesite slurry in water, a plate and frame filter press is to be designed. The slurry contains 200 kilogram magnesite in 10 meter cube water. Filtration is conducted under a constant pressure of 100 kilopascal. So इस लेक्चर नंबर 1 में हमने कांस्टेंट प्रेशर का ही केवल केस लिया. इन दिस लेक्चर नंबर 1 आई एम टेकिंग कांस्टेंट प्रेशर केस. ओके, so under a constant pressure of 100 kilopascal, the specific cake resistance is 2 into 10 to the power 10 meter per kg and the filter medium resistance is negligible. The time of filtration is taken as 2 hour and the cake density is 1200 kilogram per meter cube of wet cake. Assuming wet cake contains negligible amount of water, the viscosity of water is 1 cp. Calculate the total filtration area required in meter square. The number of plates if their filter dimension 10 inch into 10 inch to the nearest integer. If we are assuming that the cake to fill 80% of the frame and we are taking number of plates to the next integer, then the thickness of the frame is. That's it. Come on बेटा, जल्दी से लगा के दिखा दो यार, खुश कर दो. Come on everyone. And to solve this problem, if you want any hint, please you can ask me in second timer. Because three problems, so I will give you two, 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 and two additional. Okay, so now I am going to start first timer. आराम से लगाओ, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए देन आस्क मी फॉर मोर टाइम. जस्ट राइट यम इन कमेंट सेक्शन, आई विल गिव यू एडिशनल टाइम बेटा. बिकॉज जैसे आप प्रॉब्लम को खुद लगाना स्टार्ट करोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, सॉल्व होना स्टार्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. एंड वंस यू स्टार्टेड फीलिंग कॉन्फिडेंट देन बेटा मज़ा आ जाएगा. फिर तो आपको गेट में मस्त वाले रैंक कोई रोक नहीं सकता है. चलो भाई जल्दी से कर दो. The first part and second part is very very easy. Third will little bit difficult, need more calculation. But third and fourth is very very easy. Come on, everyone. And beta try to be live in subsequent lectures too. सभी लोग लाइव रहने की कोशिश करोगे, ठीक है? क्योंकि लाइव में अगर आप कंप्लीट कर लेते हो ना तो फ़ायदा होता है, चीज़ें एक्यूमुलेट नहीं होती हैं. अदरवाइज वैसे तो इतना डिटेल में आपको बता ही देते हैं कि आपके रिकॉर्डिंग से भी डाउट्स नहीं रहते हैं, बट फिर भी चीज़ें एक्यूमुलेट करना सही नहीं है. अभी आपके लेक्चर उतने ज़्यादा इसमें नहीं लगातार आते, ठीक है? बट अभी कुछ दिन के बाद आपके लेक्चर्स जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा और ज़्यादा बढ़ने लगेंगे न्यूमेरिकल वाले. और अगर आपका मिस हो गया ना तो सोचते रह जाओगे उसको कब मैं कवर करूँ. सो प्लीज़ बेटा ट्राई टू ज्वाइन लाइव. और लाइव रहते हो थोड़ा अच्छा भी लगता है, ज़्यादा लोग रहते हो लाइव, आपस में आपके आंसर्स भी मैच होते हैं, आपको भी फील अच्छा लगता है कि यार मैंने अच्छा आंसर दिया, राइट आंसर दिया. ओके, सो ट्राई टू बी लाइव बेटा एवरीवन. And as I already told you, next subject in pure numerical batch is IPC and mass transfer operation. So first revise your IPC notes. One timer तो खत्म हो गया रे बाबा. ये लो, I am starting beautiful timer number 2. Come on beta everyone. 10 to the power 10 is alpha. No beta. 2 into 10 to the power 10 is alpha, Ankesh. See there, specific cake resistance is 2 into 10 to the power 10. It's not 10 to the power 10 only.
I will not left any topic in any subject beta. That means your whole paper is going to come just only from this pure numerical batch. So take it seriously and don't miss any lecture live. और जो मिस हो गया है ट्राई टू सी रिकॉर्डिंग्स एज सून एज पॉसिबल. जब आप रिकॉर्डिंग देखते हो डोंट यूज फॉरवर्ड बटन, रियल टाइम में उस समय भी देखा करो. जितना टाइम देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उतना टाइम लिया करो. आफ्टर दैट सी एक्सप्लेनेशन. ऐसा नहीं कि तुरंत लगाया और सोच लिया नहीं ये तो लग ही नहीं सकता, अब जल्दी में फॉरवर्ड करके एक्सप्लेनेशन देख के समय बचा लो. कभी नहीं सीख पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे बेटा. लड़ो, लड़ाई करो उस प्रॉब्लम से तब तक जितना समय हमने आपको लड़ने के लिए दिया है. फिर रैपिड फायर खेलने वाले हैं. कुछ लेक्चर्स जब हो जाएंगे देन आई विल स्टार्ट रैपिड फायर लाइव टेस्ट बिटवीन यू गाइस. फटाफट टाइमर चलेगा और उतने ही देर में आपको आंसर देने का होगा, जिसमें अभी या तो आप एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो और टेकिंग एडिशनल टाइम इन दीज लेक्चर्स, बट देन आई विल नॉट अलाउ एनी एक्स्ट्रा टाइम इन रैपिड फायर लेक्चर. तो भैया ख़त्म हो गया एक और टाइमर. चलो फाइनल दो टाइमर वापस से इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ and I will start this timer again after few seconds. If anyone want hint from my side then just write H in comment section. If you want to know few basics of this problem that is hint then please write H in comment section. अगर किसी को हिंट चाहिए कैसे सॉल्व करें सर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या, then I will tell you. तो भैया हिंट ये है, हिंट फॉर दिस प्रॉब्लम you have to use same equation again already used in problem number 1 and 2, but be consistent with unit. रिवीजन नहीं हुआ लग रहा है आपका, नॉट रिवाइज्ड. सी बेटा दिस इज प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस. ओके 12.9 meter square is not correct. रॉन्ग है बेटा. या अगर मेरा कैलकुलेशन गलत होगा देन मे बी यू आर करेक्ट. तो अभी फिर से चेक कर लेते हैं, अदरवाइज थोड़ा वेट करते हैं नेक्स्ट आंसर के लिए. नो बेटा माय आंसर इज डिफरेंट and I think my calculation is also correct.
210. Okay. 2 into 10 to the power 10, 2 over 1200. 1200 by okay. 0.089 is also not correct, beta. Sorry. You want hint? अगर कुछ एक्स्ट्रा हिंट चाहिए जस्ट राइट यच, क्योंकि हिंट लेके भी सॉल्व करोगे ना, व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू सॉल्विंग प्रॉब्लम by taking hint from my side, then also you will feel confident, beta. So if you can't solve, then ask for hint. Okay. So hint for this problem is, for problem number 3, you have to use that equation T by V equals to mu alpha C upon A square delta P, 2A square delta P V square. तो V तो उधर चलेगा, तो इधर V आएगा, V plus mu Rm upon A delta P. You have to use that equation. और अगर इसे टी के फॉर्म में लिखोगे, इफ यू टू राइट जस्ट टी इन एलएचएस, देन टी बिकम्स इक्वल्स टू म्यू अल्फा सी वी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर डेल्टा पी प्लस म्यू आर एम अपॉन a delta p, and second term will become 0 because rm is 0 clearly mentioned in this problem. Then you will get one equation, and just put all the values. You will get a square value, just take a square root, it will give you a. That is total filtration area. Ankish, you are nearby my answer, but still 4.89 is not correct. Javel not correct. Vipash not correct. Everyone beta. अभी किसी का भी सही नहीं है. No one is correct. You have to solve just one equation. Tell me beta, what is the value of C? You are taking in this problem. What is the value of C? Can you tell me beta C? The value of C, please tell me everyone. आपने C क्या लिया? How do we calculate volume? Please wait beta. Just tell me what are you taking? C value. Tell me beta C. How do we calculate the volume of filtrate? Beta, the total volume of filtrate is 10 meter cube because the slurry contains 200 kilogram magnesite in 10 meter cube water. That means total 10 meter cube water we are going to obtain as filtrate now. No, beta, 1200 is not the value of C. C is concentration of slurry. That means kilogram of solid per meter cube of filtrate. So here 200 by 10 will give you the value of C, and C is 20 beta. Okay, C is 20. Okay, beta, Ankish, Ziavel, Vipash, Sujata, everyone beta clear? शेख मुदाशिर बेटा, एवरीवन सभी का क्लियर हो गया ना? हाउ टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ सी सी सी? ओके, सो ये लो भैया, एक और टाइमर ले लो, लेकिन इसके बाद मत लेना टाइमर, बिकॉज 3 4 5 5 will take approximately 10 minutes to explain. लगाने में अगर आप खुद लगाओगे then it will take 2 or 3 और मिनट, मैक्सिमम 3 minutes or 3.5 minutes. Now beta, tell me, at least tell me answer of third. The value of A, capital A. Yes बेटा, absolutely correct विभास. अभी विभास ने एकदम फतह कर दिया बेटा, congratulations. 5.27 is absolutely correct. यानी कि मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं है. I am correct. हम सही है. Very good बेटा अंकेश, क्या बात क्या बात. Now you got the concept ना everyone. Concept समझ आ गया ना कितना easy था. The problem is very very easy. How to extract data. Now feeling more confident. So I will start explanation after 40 more seconds. कंसंट्रेशन गलत कर रहे थे तो मत करना बेटा. कंसंट्रेशन क्यों गलत कर रहे थे? साफ साफ लिखा है इन लाइन नंबर 2, द स्लरी कंटेन्स
200 kilogram magnesite in 10 meter cube water. And don't misunderstand by cake density. Cake density is in per meter cube of wet cake. That means just mass of solid per meter cube of solid, because clearly mentioned that you are going to assume wet cake contains negligible amount of water. That means you are going to obtain all 10-meter cube as filtrate. Very good, Jia. Well, you are also correct. Chalo beta, so I am going to explain third one. Pay attention here. आई एम वेरी हैप्पी कि काफ़ी बच्चों के आंसर आ गए. जो नहीं लगा पाए, नो नीड टू वरी. सी हियर बेटा, योर इक्वेशन you need to remember this equation, that is t by v. You can also write this equation as t by v. So t by v equals to mu alpha c v by 2 a स्क्वायर डेल्टा p. देख लेना यार, सही है ना. एंड प्लस म्यू rm upon a delta p. So this was your equation. And this problem, filter medium resistance is 0. So RHS is 0 now beta. And now the equation for T, you can write T equals to mu alpha C V square upon 2 A square delta P. You need the value of A. So A square is mu alpha C V square upon 2 T delta P. And after putting all values, it will give you A square. So mu was 1 centipoise, that is 0.001. Alpha is given as 2 into 10 to the power 10. And C was 200 kilogram in 10 meter cube, that means 200 by 10, it will give you 20. And total volume of filtrate is 10. So it's 10 square upon 2. Total time to obtain this volume of filter is 2 hours. That means 7200 second. And delta P was there. Constant pressure of 100 kilopascal. That means 100,000. Okay. So as you already told, same value of A. So need not to calculate again. After calculation, it is 27.778. And by taking a square root of 27.778, your final answer will be 5.2705 meter square. So up to 2 decimal place if you want to write, then your answer should be 5.27. I hope each and every student is crystal clear in this answer number 3. बोलो बेटा, सभी को clear? Okay, you want to see question again? See beta. Vibhas, 82 is not correct. 82 is not correct. Your calculation is correct, beta Vibhas. Vibhas, your calculation is correct. Clear, beta Ankish? Very good. Your calculation is correct. I know. I know your mistake. आप क्या mistake कर रहे हो so that you are getting 82 as your answer. हमें पता है आपका वो mistake क्या है. आपका सब कुछ सही है. जस्ट इस प्यारे से एक बार फिल्टर प्रेस को देखो बेटा. सी दिस फिल्टर प्रेस, प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस. शायद आपको समझ आ जाए कि आपका मिस्टेक क्या है. ओके, slurry is coming, going inside, and from each filtrate is coming from bottom. ओके, नाउ सोचो क्या मिस्टेक किया है. ये देख लो भैया, क्वेश्चन वापस से लगा देते हैं. ये लो भैया. Okay, your net is okay now. See question again. थर्ड वाला बेटा एक्सप्लेन कर दिया. नाउ सॉल्व फोर्थ वन. Yes, Sheikh Mudassir Irshad told
मी एब्सोल्युटली करेक्ट कि क्या मिस्टेक किया. 41 इज करेक्ट बेटा. वेरी गुड. बोथ साइड का लोगे ना एरिया है. यू वांट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन पर प्लेट या और इन एवरी प्लेट टू साइड. दोनों साइड से जाएगा ना बेटा. फिल्ट्रेट इज कमिंग फ्रॉम बोथ साइड ना. यू कैन सी इन दिस डायग्राम कमिंग फ्रॉम बोथ साइड ना. इधर भी है इधर भी है. हाँ. यस. दैट इज वाई आपका आंसर डबल आ रहा था. 41 इज करेक्ट. अच्छा लगा बेटा. मजा आ रहा है ना अभी. प्रॉब्लम सॉल्व होते जा रहे हैं तो चलो 5th वाला तो हमें नहीं लगता है कि आप लगा पाओगे. बट फिर भी हम आपको एडिशनल टाइम देते हैं. आई एम गिविंग यू एडिशनल टाइम फॉर 5th 1 कि आप हमें गलत साबित कर सको. एंड अगर हमें गलत साबित करोगे देन आई विल बी वेरी हैप्पी. अगर इस तरह से हम गलत साबित हो कि 5वां आप लगा दिखा दो सर हमने लगा दिया. ठीक है. उसके पहले 4th 1 आई एम गोइंग टू डिस्कस. सी बेटा हियर 4th 1. Okay, so in 4th 1 you have to calculate total number of plates. Total number of plates. And this calculation is also very easy beta, because you remember in case of heat exchanger, when you are going to calculate total number of tubes, one technique is there. Just obtain total surface area required divided by surface area provided by one tube. It will give you total number of tubes required for that heat duty. Similarly here, you have to calculate how much filtrate area or filtration area one plate will provide you. So I am writing here area of filtration per plate. Area of filtration per plate. And also I have to calculate this not in terms of inch but in terms of meter square, not in terms of inch square. So 10 by 10, that means 10 by 10, and to convert this 0.0254 is there, because 1 inch becomes equals to 2.54 centimeter, or you can write 0.0254 meter. Okay, so this is the area provided by one plate, and it will come, no, sorry, 2 is also there na? Because both sides. So this is area of filtration per plate. So after calculation it will come 0.129032, बिकॉज आपका भी आंसर वही आया है तो एक बार फिर हमें कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. माई कैलकुलेशन इज ऑलरेडी करेक्ट. सो नाउ number of plates required equals to total area upon area of provided by one filtration area provided by one plate. So total area was 5.2705 and it is 0.129032. After calculation it will give you nearly 40.846. So answer you want nearest integer is 41. This is your answer number 4. Now चलो भाई 5th 1 सॉल्व करो, या कहो तो डायरेक्टली हम एक्सप्लेन कर दें अगर हथियार डाल चुके हो तो, या थोड़ा बहुत लड़ाई करना चाहते हो. चलो लड़ाई करो, हो सकता है कि सॉल्व हो जाए. ओके, सो आई एम शोइंग यू this beautiful problem number 5 again. If we are assuming that the cake to fill 80% of the frame and we are taking number of plates to the next integer, that means 41, then the thickness of the frame is in millimeter up to 2 decimal places. ऐसा करते हैं, ऐसे तो कितना टाइम दिए पता ही नहीं चलेगा ना. आई एम रिफ्रेशिंग टाइमर अगेन एंड स्टार्ट टाइमर. 2 मिनट टाइमर. एंड अगर किसी का सॉल्व हो रहा होगा तो सेकंड टाइमर लेना, अदरवाइज डोंट वेस्ट टाइम, आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन.
A beautiful hint for you guys for to solve this problem. That is problem number 5. You have to use cake density data. इससे ज़्यादा हिंट नहीं देने वाले. That's it. इससे ज़्यादा हिंट नहीं मिलेगा. इतने हिंट में काम चलाना है तो काम चला लो रे बाबा. Come on everyone. 70 सेकेंड लेफ्ट. इससे ज़्यादा हिंट नहीं मिलेगा. Come on बेटा everyone. You have to use cake density to solve problem number 5. I will tell you steps after this timer. After 50 सेकेंड ये टाइमर खत्म होता है देन आई विल टेल यू स्टेप्स. तो हम चाहेंगे उन स्टेप्स को फॉलो करो एंड देन टेल मी आंसर. अगर नहीं लगा पा रहे अपने साइड से कोई नहीं. यू आर हियर टू लर्न एंड यू विल लर्न इन ईच एंड एवरी लेक्चर बेटा. आपको सब कुछ आता है लेकिन अगर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपने ज़बरदस्त तरीके से नहीं की तो फिर एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं. और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं बच्चे की. एग्जामिनेशन तक अपने बैठ के नोट्स को ही पढ़ते रहते हैं. फाइनली थोड़ा पीओक्यू लगा लिए, टेस्ट सीरीज जो लिए उसके कुछ टेस्ट दे दिए, वो न्यूमेरिकल की प्रॉपर प्रैक्टिस कर ही नहीं पाते हैं. दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड दिस ब्यूटिफुल सीरीज ऑफ प्योर न्यूमेरिकल बैच बेटा. एंड आई होप कि इसका बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा. चलो बेटा तो स्टेप्स सुन लीजिए सभी लोग. इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व देन स्टेप्स. स्टेप नंबर 1. फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मच मास हाउ मच मास contained in one plate. Okay, after calculating this you have to calculate how much volume how much volume required for that mass by using cake density data. After that you have to find thickness of the cake. How thickness of the cake? If you are going to divide total volume of cake by area of that plate. वन साइड प्लेट दोनों साइड मत कर देना. ऐसे करके ऐसे बढ़ा दिया, हो गया चौड़ा, वॉल्यूम में हो गया पूरा. देन इट विल गिव यू थिकनेस ऑफ द केक. एंड थिकनेस ऑफ केक बिकॉज 80% केवल फिल कर रहा है तो फ्रेम का कितना होगा थिकनेस डिवाइडेड बाय 0.8. इट दिस इज योर फाइनल आंसर आफ्टर कन्वर्टिंग दिस इनटू मिलीमीटर. या चलो बेटा तो 2 मिनट देते हैं इस कैलकुलेशन के लिए. जिसको समझ आया इतने के बाद भी लगा लिया ना, बल्ले बल्ले है. ठीक है, क्योंकि इतनी जल्दी बातों को समझना इसमें अपने आप में भी एक बहुत ही ब्रिलियंस को शो करता है. तो चलो देखें 2 मिनट में कौन लगा पाता है. यू हैव 100 सेकेंड लेफ्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम नंबर 5. कम ऑन बेटा एवरीवन, सॉल्व इट. सारे स्टेप्स बता दिए बेटा आपको. ऑल स्टेप्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू बेटा. $45 left. Come on, beta, everyone. टाइम तो अप हो गया बेटा. If you want more time, just write yum in comment section. I am waiting till next 15 seconds. Otherwise, I will give you explanation.
प्लीज राइट यम इन कमेंट सेक्शन इफ यू वांट मोर टाइम बेटा। अगर ज़्यादा टाइम चाहिए थोड़ा सा देन प्लीज राइट यम। आपको लग रहा सॉल्व कर लोगे तो। एक्सप्लेन, यू वांट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम माय साइड, यू आर अनेबल टू सॉल्व। Okay, beta. So now I am going to explain. See here, this problem is also very easy, beta. If we are assuming that the cake to fill 80% of the film, that means what, beta? See here, this is your plate and frame filter press. 78.78 शेख मुद्दासिर बेटा, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। पार्टी बनती है बेटा, ठीक है, पार्टी लेंगे आपसे हम। कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम योर साइड बेटा। लग रहा है कि इस बार एक अच्छी रैंक आपके साइड से मिलने वाली है हमें। ओके, सी बेटा हियर 80% मीन्स व्हाट, दिस इज टोटल एंड 80% इज फिल्ड। ब्लैक से दिखाते हैं। 80% इज फिल्ड। आउट ऑफ दिस टोटल 80% is filled, one side and both side. If you are going to take 80% is filled. Okay, now see here, problem is very easy बेटा। अगर आप स्टेप सुनने के बाद भी लगाते हो तब भी हम बहुत खुश हैं। Now see here, cake to fill 80% of the frame. Okay, so first I am going to calculate how much cake contained in one plate. So cake contained in one plate. So total solid was 200 kg and number of plates was 41, and after calculation it will come 4.878 kg. 4.878 kg. Okay, and as it is already given in your problem that cake density is 1200, so now I can calculate how much volume. If the amount of cake is 1200 kilogram, in that case the total volume occupied by this cake is 1 meter cube. But if 4.878 kg, then how much volume? Very easy. So next line you have to calculate volume occupied by 4.878 kg cake. Okay, and it will come 4.878 divided by this 1200, because if 1 meter cube, if 1200 kg, then 1 meter cube volume will be there. If 1 kg, then 1 by 1200. But if 4.878 kg, then 4.878 multiplied by 1 by 1200. And after calculation, this will be in meter cube, because kilogram and kilogram per meter cube. After cutting, you will get answer in meter cube. It will come 0.004065. 0.004065 meter cube. Okay, so this is volume occupied by cake in one plate. In one plate. Okay, like if this is your plate beta, if this is your plate, then this volume is occupied. This volume is occupied, and total volume occupied is 80%. This both, this is one plate. This is one plate. I am showing just one plate and frame. So one plate is there. So this is 80%. This is 80%. Okay. So first I want to know how much thickness, how much thickness occupied by this 4.878 kg cake. So you know ना, अगर इसे हम ऐसे इक्विवेलेंट डायग्राम, इफ आई एम गोइंग टू मेक वन इक्विवेलेंट डायग्राम लाइक दिस, लाइक 80% वॉल्यूम इज फिल्ड विद केक, देन दिस इज योर एरिया ना। अगर प्लेट 3D में देखोगे, इफ यू वांट टू सी प्लेट इन 3D, देन दिस इज योर प्लेट, दिस इज योर प्लेट। ओके, सो दिस, इफ यू आर गोइंग टू
take this area and multiply it by this thickness, then it will give you a volume. That means A T A T will give me volume. Hmm? Is it clear? Is it clear, beta? So thickness can be written as volume occupied by cake in one frame. This is frame divided by area. This side area. This area. Okay. So volume was 0.004065 upon area was, and बेटा one thing you must clear, area एक साइड का लोगे यहाँ मत 2 का मल्टीप्लाई कर देना. So 10 multiplied by 0.0254, this is now in meter, and 10 by 10. Okay, so this is what thickness of the cake. This T is what? This is thickness of the cake. Thickness of the cake. Okay, so this thickness will come 0.063 0.063008, बिकॉज एक बच्चे ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है. दैट मीन्स मेरा कैलकुलेशन भी करेक्ट है, दोबारा कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. एंड इन एम एम यू कैन राइट दिस एज 63 पॉइंट, वेरी गुड बेटा विभास, 63.008 millimeter. But this is not your final answer, beta. This is not your final answer. This is thickness of the cake, not thickness of the frame. This is not thickness of the frame. So from entire frame, only 80% occupied by this cake. From entire frame, only 80% is occupied by this cake. So thickness of frame, thickness of frame will be T upon 0.8. So how much T? T was 63.008 mm. And what is the value of, oh sorry, it's 80% given. So after calculation beta, it will give you 78.76 millimeter. So this is your final answer बेटा. बोलो बेटा, समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करेंगे? आसान था ना? एंड आई होप सर्वगुण संपन्न प्रॉब्लम था. पूरी की पूरी स्टोरी थी, फुल स्टोरी प्रॉब्लम. आई होप पूरी की पूरी प्रॉब्लम आप समझ गए होगे. दैट if anyone want to ask you problem relating constant pressure filtration, एंड अगर उसके अंदर लोग घुसा देते हैं, इफ दे आर गोइंग टू इंक्लूड प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर एंड सो मच थिंग्स, देन डेफिनेटली आई होप कि आप फंसने वाले नहीं हो. यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, इन सब्सिक्वेंट लेक्चर आई विल शो यू मोर फिल्ट्रेशन न्यूमेरिकल्स. बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स अभी आपके लिए फॉर्मुलेट किए हैं. वॉशिंग टाइम में बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी नहीं छोड़ा है बेटा. आई लेफ्ट नथिंग. ओके, सो यू विल एंजॉय अ लॉट. ओके, you want explanation, last step beta. Whenever you want for explanation, don't forget to write your favorite language. दोबारा हम जब भी repeat करेंगे, then you can choose your own language. So E for English, H for Hindi. Please write beta H or E, in which language you want explanation, in which you feel more comfortable. You can ask me beta. Okay beta, English. See here beta. Last step, this one. This is your full. Wait. See this diagram. I am assuming this as 80% area. Okay, beta. This is as 80% total volume occupied by this. This is 80%. In this diagram, you can see this is not, you can't feel this is at 80%, but try to assume. Okay. And this is as 20%. But you want to know 100%. No, sorry. This is, you want to know 100%. So see beta, 80 bananas value is x. So one banana x by 80 rupees. So 100 banana x by 80 into 100.
दैट मीन्स x बाई 0.8। समझ में आ गया बेटा? गॉट इट बेटा अंकिश? y I divide 0.8 by 0.8 there. Is it clear beta? Ankish, is it crystal clear beta? Okay sir, got it. Very good beta. Fantastic, mind blowing, super. Any more doubt beta from anyone? मजा आया कि नहीं आज के लेक्चर में? एंजॉय टुडेज लेक्चर? सभी को मजा आया? जस्ट राइट यस सर इन कमेंट सेक्शन। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए ना? कम ऑन बेटा एवरीवन। Okay, very good, very good. So don't forget to revise every day beta your own notes. Try to make two notebook. In one notebook, just write your silly mistakes. Like Vibhas, forget that in a frame filter press, two must be there when want to calculate area provided by one plate. So just note down in your silly mistake notebook. Second one, formula book. In formula book, just write those formulas who you don't know during live lecture. You can't recall during live lecture. अगर लाइव लेक्चर जो ना आप रिकॉल नहीं कर पाए थे, उससे आप लिखोगे। सभी फार्मूलाज को लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, सभी फार्मूलाज को अपने नोटबुक से देखने का, नो प्रॉब्लम। जो मेन नोटबुक है आपकी, जो मेन थ्योरी वाली आपने बना के रखी है, ठीक है? ओके बेटा सुजाता, वेरी गुड। सो बेटा अभी आज के लिए इतना ही, चलते हैं। वी विल मेट सून अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। एंड ऑल्सो बेटा अगेन रुको, एक छोटे से बच्चे से मिलाते हैं। वेट, कहाँ हो गई? एक मिनट बेटा। एंड ऑल्सो बेटा डोंट फॉरगेट टू रिकमेंड दिस ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल सीरीज टू योर फ्रेंड्स। बहुत ही मस्त वाला अभी ऑफर भी चल रहा है। सो whenever you feel any of your friend want to join this beautiful pure numerical batch for gate, they will get all past recordings plus for this year gate examination 4 plus months is there, so approximately 5 months they will get live lectures also, live lectures too. So live lecture plus recorded lecture, both are available. And very huge discount offer is going on, because offer is for limited period, so I'm not writing offer here, बिकॉज रिकॉर्डिंग तो हमेशा पड़ी रहेगी। तो बच्चा कहेगा सर उस समय ये वाला ऑफर था, अभी तो ऑफर वो वाला नहीं चल रहा। तो दिस टाइम ह्यूज डिस्काउंट इज गोइंग ऑन। जस्ट कॉल मी और व्हाट्सअप मी ऑन दिस नंबर, then I will provide you this beautiful series. Okay beta? And maybe I will upload this lecture as a another demo lecture on YouTube. So YouTube पे जो भी बच्चा देखेगा लाइव बेटा, डोंट फॉरगेट टू कॉल दिस नंबर। इस नंबर पे कॉल करके इस बैच को ज्वाइन करके आप अपने गेट का सपना पूरा कर सकते हो, गेट में अपनी ड्रीम रैंक को पा सकते हो। एंड ऑल्सो जो भी बच्चा यूट्यूब पे इस रिकॉर्डिंग को देखेगा बेटा, 100% रिफंड गारंटेड। अगर आप 5 6 7 8 लेक्चर देखने के बाद भी ये फील नहीं किए कि बहुत ही बेहतरीन सर ने न्यूमेरिकल्स बनाए, अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं सर, 3 दिन के अंदर जितने भी लेक्चर देखे हो देख लो, 100% रिफंड अपना ले सकते हो। एक भी रुपया सर नहीं रखेंगे, बिकॉज आई नो दिस इज़ ब्यूटिफुल एंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गेट के एग्जामिनेशन के लिए। इसके लिए इसका प्राइस अभी बहुत ही ज़्यादा लो कर दिया है, यूट्यूब पे जितना शो कर रहा है उस पर भी अभी ऑफर चल रहा है, बट अभी चल रहा है ऑफर। सो ट्राई टू गेट दिस कोर्स एज सुन एज पॉसिबल बेटा। सो अभी चलते हैं। You can leave this class beta. Lecture will end in the next 70 to 80 seconds. I'm just making PDF file.
Oh, beta, so all the best and a very happy good night to all of you. Take care and don't forget to revise every beta. I must do my revision daily. 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 5 टाइम्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको आपके नोट्स एटलीस्ट 5 टाइम्स तो कम से कम रिवाइज करने हैं। और पी वाई क्यूज को कैसे रिवाइज करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर्स में।